Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम निक्की है और आप लोग देख रहे हैं इंटीरियर अवतार. In today's video, I'm going to share a makeover of my home entrance. I have decided to give a zen vibe to my entrance space so that it reflects peace and serenity. So without further ado, let's quickly get into the video and let me show you this makeover process. So guys, इसके ऊपर जो सामान था मैंने हटा दिया है and now I will remove this cabinet and will just clean up this space. For these two walls I have decided to do stencil work. So let me show you how I made this stencil. Stencil बनाने के लिए I have sketched out this lotus. For cutting this stencil out, you need a sharp paper knife. So guys, here is my stencil work and मैंने lotus choose किया है इसलिए because I'm going to place a Buddha over the cabinet. So lotus is the stencil that I have chosen. And अब क्या करेंगे, इसको wall पे लगा के I will take a gold spray paint and start stenciling it. So let's start the process. So guys, I'm done with stenciling of the wall and trust me, it just looks beautiful. So मैंने यहाँ पे cabinet भी place कर दिया है. Now it's time to style this cabinet. Plus ये वाला जो area है, we will do the styling of this space now. So let's get to the process. तो मैं इस cabinet के ऊपर place करने वाली हूँ. ये एक runner था मेरे पास. This I'm going to place. Then I'm going to place this Buddha जो कि मैंने होम सेंटर से परचेज किया था. ये दो कैंडल होल्डर्स भी मैंने होम सेंटर से परचेज किया था. This I'm going to place besides the Buddha. और ये वाला जो वास देख रहे हैं, this vase is also from से था, so इसको I will place it over here. और ये एक छोटा सा कैंडल होल्डर है जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया था. सो इस कॉर्नर में मैं डालने वाली हूँ एक लैम्प जो कि DIY लैम्प है. सो आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो पता ही होगा कि बिना DIY के मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं. सो लेट्स डू द DIY लैम्प एंड देन प्लेस इट हियर.
गाइज मेरा DIY लैम्प रेडी हो गया है एंड आई हैव प्लेस्ड fairy light inside it, and now let's place this lamp right there. For the floor I will take this round jute rug. ये आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखे होंगे, मैंने लिविंग रूम मेकओवर में भी यही वाला जूट रग यूज किया था. सो आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर. अब कॉर्नर में मैं ये वुडन स्टूल प्लेस करूंगी जिसके ऊपर आई विल कीप माई एरिका पाम ट्री. अब इस साइड में आई एम प्लेसिंग माई पोल्का डॉट प्लांट एंड फाइनली आई एम प्लेसिंग अ फिडल लीफ प्लांट टू कंप्लीट दिस मेकओवर प्रोसेस. आई होप आप लोग आज का ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to hit that bell icon so that whenever I upload a video you do not miss that update. So आज के लिए बस इतना ही. I will see you in my next video. Until then, take care, stay safe, stay blessed. Bye bye.